Okay, so in the last session, we started off with a topic called as magnetization and magnetic intensity. Magnetization and magnetic intensity. मैंने आपको रफली रफली बताया था ये सब. आई विल रिपीट अगेन. देखो, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है. यू हैव टू बेसिकली नो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस. बेसिक आइडिया ये है कि हमने देखा था कि एक मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म का सोर्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग and that acts as a current loop and that leads to मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो उसके दो कंट्रीब्यूशन होते हैं. एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक होता है स्पिन डायपोल मोमेंट. राइट. देन वी सॉ कि कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि देयर इज नो नेट डायपोल मोमेंट. अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो यू हैव नेट डायपोल मोमेंट इन दैट एटम. जिस एटम में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन होता है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है वहां पे. जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है. जब हम बल्क मटेरियल की बात करते हैं, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बल्क मटेरियल, लेट मी टेक वन बल्क मटेरियल हियर. ये एक मैंने एक स्लैब लिया है और मान लेते हैं कि इसके पास नेट डायपोल मोमेंट है. मतलब बेसिकली ये स्लैब जिस एटम से बना हुआ है दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास हर एक एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है. और बिकॉज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगी. तो किसी का डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, किसी का ऐसा होगा, एंड लाइक दिस. ओके, राइट. अब यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन. राइट. सो हाउ डू वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन? इज नथिंग बट net dipole moment per unit volume. Okay, so that is called as magnetization. So you can write magnetization m, capital M या फिर mz से भी डिनोट करते हैं, capital M bar as net dipole moment upon volume per unit volume. Okay, तो इसके मैं यूनिट्स भी बना सकता हूँ, मैं इसके डायमेंशन भी लिख सकता हूँ. तो डायमेंशंस अगर आपको लिखने हैं तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन m, इसके डायमेंशंस कैपिटल M के डायमेंशंस आएंगे L raised to 1, L raised to minus 1 and current raised to 1. मतलब ये एम्पियर पर मीटर में आएगा. कैसे? आपको याद होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है I इंटू ए, करंट इंटू एरिया, और वॉल्यूम इज V. तो एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है. तो आपके पास बचेगा करंट अपॉन लेंथ. तो इसलिए एम्पियर पर मीटर में इसका डायमेंशन आता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग दिस. इतना पता होना जरूरी था कि एक मटेरियल है, वो मटेरियल में अगर एटम्स जो है उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हर एक एटम के पास एक नेट डायपोल मोमेंट है. जब बल्क मटेरियल की बात करूंगा मैं, तो उस केस में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन. राइट, सिंपल थिंग. अब अगर मैं एक टोरॉइड लेता हूं, एंड यू रिमेंबर व्हाट इज अ टोरॉइड. अगर मैं अब एक टोरॉइड लेता हूं तो टोरॉइड के केस में यू नो कि टोरॉइड पे वाइंडिंग होती है. वी हैव वायर वाउंडेड ओवर अ टोरॉइड. ओके,
और इस टोरॉइड का जो एक्सिस है दैट इज दिस एक्सिस। ऑलराइट, अब अगर इस टोरॉइड में से मैं कॉइल में से मैं अगर करंट आई पास कर रहा हूं, तो हमने ऑलरेडी देखा कि टोरॉइड के एक्सिस पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट इज गिवन बाय B equal to mu 0 Ni, where N is number of turns per unit length, तो small n is capital N upon 2 pi r। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। ओके, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को B0 से डिनोट करता हूँ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ करंट, लेकिन जो टोरॉइड का मटेरियल होगा, ओके, टोरॉइड का मटेरियल अगर ऐसा है कि उसमें नेट डायपोल मोमेंट है हर एक एटम में, तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो उसको मैं डिनोट करूंगा Bm से। एंड Bm इज नथिंग बट इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। तो Bm जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। तो बेसिकली यू हैव म्यू 0 m। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ड्यू टू द करंट प्लस ड्यू टू द मटेरियल इटसेल्फ। तो मैग्नेटाइजेशन पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको ये पता लगेगा कि अगर मैंने टोरॉइड लिया है, टोरॉइड जिस मटेरियल से बना है उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि करंट पास कर रहे हैं तो करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया ड्यू टू करंट प्लस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो ये आपको मिलेगा B इज इक्वल टू B0 विच इज म्यू 0 Ni प्लस म्यू 0 m। तो म्यू 0 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ Ni प्लस m। ये जो Ni है इसको हम डिनोट करते हैं H से, एंड दैट इज कॉल्ड एज magnetic intensity. So this H is called as magnetic intensity. Okay, now there is one more thing। अभी magnetic intensity is because of the current Ni। okay, वो बाद में हम लिख लेंगे। Also हम लोग एक रेशियो डिफाइन करते हैं which is called as magnetic susceptibility। magnetic susceptibility is the ratio of magnetization to that of magnetic intensity। और इस ससेप्टेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है ये अगले टॉपिक में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल सीखने वाले हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काय जो है इसका वैल्यू हमको बताएगा कि मटेरियल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है कि क्या है। राइट, सो फॉर द टाइम बीइंग आपको पता होना चाहिए दैट वी आर डिफाइनिंग अ रेशियो of magnetization to that of magnetic intensity, which is called as magnetic susceptibility। Now I can substitute, so I have B is equal to, यहाँ से मिल जाएगा magnetization M is equal to chi into H। तो B will be mu 0 H plus chi into H। तो ये आ जाएगा mu 0 1 plus chi H। okay, right, so you will have B is equal to, ये जो यहाँ पे 1 प्लस काय है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू H। बट व्हाट वी नो इज, नॉर्मली हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज permeability of free space into relative permeability, because relative permeability in reality is defined as permeability upon permeability of free space। तो by definition you have permeability as product of permeability of free space and permeability, relative permeability of the medium। मतलब ये जो है इसको मैं सिर्फ म्यू बोल सकता हूँ। तो B is equal to mu H, right, correct। तो this is what you need to know। okay, so this is the total magnetic field inside a toroid which comes from two parts। it comes from magnetization, मतलब basically because of material, and it comes from the current।
तो इतना सिंपल है ये। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं लास्ट लेक्चर का जो स्लाइड था, क्योंकि वी हैव ड्रॉन दैट डायग्राम प्रॉपर्ली, आई एम गोना यूज दैट, so that will go into your notes. So I will just put it over here, right? Okay, so we have already used this particular diagram in the last lecture. Okay, so now I am gonna delete more or less everything from here, और हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, जो जो हमको लिखना है हम लोग लिख लेंगे. Okay, I keep some of the diagrams. Okay, तो सबसे पहले हमको मैग्नेटाइजेशन क्या है वो डिफाइन करना है, राइट? सो आई जस्ट ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. सो व्हाट वी नो इज, हमको पता है कि सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है. बल्क मटेरियल में ये मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप हो सकते हैं, और दे कैन गिव यू रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो. What is total magnetic moment, net magnetic moment in a unit volume, that is magnetization. So we know that a circulating electron in an atom has a magnetic moment. Has a magnetic moment. In a bulk material, अब बल्क मटेरियल में एक एटम तो नहीं है, बल्क मटेरियल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये बहुत सारे एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो वेक्टोरिकली एड अप हो सकता है. सो इन अ बल्क मटेरियल, what we can have is, we can have like this magnetic moments, this moments add up vectorically, and they can give a non-zero या फिर a non-zero net magnetic moment, a non-zero net magnetic moment. Right, this net magnetic moment per unit volume is called as magnetization. The net magnetic moment net magnetic moment या फिर magnetic dipole moment, the net magnetic dipole moment per unit volume is called as magnetization of the sample, is called as magnetization of the sample या फिर material. Okay, so by the way magnetization is a vector quantity, और हम लोग उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, right? Then we need to know what are the SI units of this. So what we can write down is, therefore
magnetization is equal to net magnetic moment. Just a minute. Net magnetic moment upon volume. Just a minute. Getting something crazy. Yeah. Okay. Therefore, I can write m bar is equal to m bar upon b. Okay. Therefore, what you can say is we already know it is a vector quantity और उसके dimensions क्या है, we can write down. So dimensions of m are L minus 1 and I1, and SI units are ampere per meter. So the SI units are ampere per meter, right? So this is how simple it is. अब हमको क्या करना है, we want to consider हमारे पास एक टोरॉइड है, टोरॉइड पे वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो रहा है, राइट? सो लेट्स कंसिडर अ टोरॉइड. Consider a toroid of average radius small r, of average radius small r, of such a material with some net magnetization. तो जो टोरॉइड का मटेरियल है उसका कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन है, विथ सम नेट मैग्नेटाइजेशन placed. Okay, anyway, so I'll just say जो सिंपल थिंग हमको डिफाइन करनी हम कर लेंगे. जैसे लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length, and the current is I. Let I be the current through the solenoid, through the winding of solenoid. Let I be the current through the windings of toroid. Right, now what we know is, we know that magnetic field inside the toroid due to current, axial magnetic field is better to say. We know that axial magnetic field due to current inside the toroid is B0, which is mu 0 and I. Let's call this equation number 1, right? अब as I told you कि ये जो मटेरियल है इसके पास नेट डायपोल मोमेंट है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, also the magnetic field
due to the rod or due to the material, magnetic field due to the material of toroid is given by, due to the material of toroid is given by Bm, which is mu 0 m. Equation 2, where m is magnetization of the material, where m is magnetization of the material of the toroid, right? फिर हम लोग बोल सकते हैं therefore the net magnetic field inside the rod is, therefore net magnetic field inside the rod is, तो total magnetic field क्या होगा, B0 plus Bm, and therefore this is equal to mu 0 Ni plus mu 0 M. Therefore B is equal to, you can take out mu 0 common, Ni plus M, right? But Ni is equal to H, which is called as magnetic field intensity. Magnetic field intensity. Right? Therefore, what we will have is B is equal to mu 0 H plus M. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करेंगे, है ना? लेट अस डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, magnetic susceptibility chi as the ratio of magnetization to that of magnetic intensity, to that of magnetic intensity. This is equation number 3. Therefore, what you can write is chi is equal to m by h, equation number 4, right? Or what I can do is I can say m is equal to chi h, equation number 4. So substituting equation 4 in equation number 3, substituting equation 4 in 3, we get B is equal to mu 0 H plus chi H, which is equal to mu 0 1 plus chi H common, but 1 plus chi is equal to mu R, which is relative permeability of the medium, relative permeability. Therefore B is equal to mu 0 into mu R into H. Also mu 0 into mu R is nothing but permeability of the medium mu. Therefore we have B is equal to mu H. So this is the expression for magnetic
field inside a toroid. Okay, तो इजी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने करके दिया है. So please follow these notes because I am trying to keep it as simple as possible. Okay, right. Now this is a proper time where we can introduce types of materials, types of magnetic materials in short. So the next topic that we want to see is related to types of magnetic materials. So next topic is magnetic properties of materials. Magnetic properties of materials. तो बेसिकली क्या है कि मैंने अगर एक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल को लेते हैं, और वो अलग अलग टाइप क्या है वो थोड़ी देर में समझ जाएगा आपको. हम लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल को लेते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं, राइट. डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मटेरियल को तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं: डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो जैसे मैंने बताया कि इवन ससेप्टिबिलिटी, ये जो काय डिफाइन किया है हमने, दिस काय, द वैल्यू ऑफ काय कैन आल्सो टेल यू which type of material it is, whether it is diamagnetic, whether it is paramagnetic, or if it is ferromagnetic. Okay, so the behavior of, just a minute, the behavior of a material, the behavior of a material in presence of, in presence of external magnetic field classifies materials broadly into diamagnetism, into diamagnetic material, मतलब into diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic, and ferromagnetic materials. Okay, for diamagnetic material susceptibility जो होता है वो नेगेटिव होता है, फॉर पैरामैग्नेटिक जो होता है वो पॉजिटिव बट स्मॉल होता है, और फॉर फेरोमैग्नेटिक इट इज पॉजिटिव बट लार्ज वैल्यू. सो फॉर diamagnetic material, for diamagnetic material, magnetic susceptibility is negative. Magnetic susceptibility is negative. For paramagnetic material, for paramagnetic material, magnetic susceptibility chi, magnetic susceptibility
यहाँ पे स्पेलिंग मेरा गलत हुआ है. Magnetic susceptibility is small, is positive but small, is positive but small. Similarly, for ferromagnetic material, so you can say for ferromagnetic material, magnetic susceptibility is positive but large. So for ferromagnetic material, it is positive but large. Okay, so let's see in the form of a table. एक table देख लेते हैं हम लोग, and we can just write down the values also. So type of material, the value of chi. Type of material and the value of chi. All right. ये values they are important for you to remember. क्यों important है? Because you'll come to know कि we can actually classify materials based on the values of susceptibility. Susceptibility के values से ही आप material को classify कर सकते हो. So that is why it is important for you to remember values. और याद क्या रखना है, बहुत ही simple है, as you will see in a while. Just in a while you will see कि बहुत ही simple case है ये. Okay, so type of material. तो ये मटेरियल का टाइप, ये उसके ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू. तो इफ वी हैव diamagnetic material, the susceptibility value is from minus 10 power minus 3 to, बाद में एक्सपैंड कर लूंगा मैं, कंप्लीट कर लेंगे, to minus 10 power minus 5. ओके, अगर मटेरियल पैरामैग्नेटिक है तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 0 से लेके 10 पावर माइनस 3 तक, मतलब 0 से लेके 0.001 तक, या तो उल्टा 0.001 से लेके तो 0 तक, ऐसा है. तो फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक के केस में व्हाट यू हैव इज 10 पावर 2 to 10 पावर 3, इतना आपको मिल सकता है, राइट. सो they are very easy to remember. Diamagnetic मतलब susceptibility negative, paramagnetic positive but small, ferromagnetic positive but large. Okay, so you can classify the material depending on this. क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्पेशली नीट जेडबल टाइप में अगर क्वेश्चन आ गया कि identify the type of material based on the value of susceptibility, या तो फिर susceptibility की वैल्यू फाइंड करो और बाद में बताओ कि मटेरियल कौन सा है. Right, so the first type of material that we want to learn about is diamagnetism. So first of all we will start with what are diamagnetic materials. So let's see what is diamagnetism. आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, एंड आई एम
going to keep it as simple as possible. देखो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो जिसको अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो इट इज वीकली रिपेल्ड। वीकली रिपेल्ड का मतलब क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग रीजन से वीकर रीजन की तरफ जाएगा। So that material will go from stronger region to weak regions of the magnetic field. तो weakly repulsion होता है यहाँ पे फर्स्ट थिंग। दूसरा, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब there is cancellation of magnetic moment. So diamagnetic materials are those materials in which there are no unpaired electrons. फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर मैग्नेटिक कैसे होगा? तो अब क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो इंटरेस्टिंग है। मान लो मैं एक ऐसे एटम की बात कर रहा हूं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेयर्ड है मतलब। तो ये एटम हो गया, ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही आपने इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दिस इज बी एक्सटर्नल, रिमेंबर वी हैड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखना हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इंडिविजुअल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन is in the direction of magnetic field, external magnetic field, and the direction of magnetic moment for other electron is opposite to that of magnetic field. अच्छे से समझ लो। In absence of external magnetic field, मैंने बताया था net dipole moment for paired electrons cancel out। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन। लेकिन जब आप इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है वो स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होना मतलब लेस करंट, क्योंकि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, वो स्लो डाउन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 1 स्लो डाउन हो गया तो करंट कम हो गया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो गया क्योंकि डायपोल मोमेंट I into A होता है, राइट। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट था वो स्पीड अप हो जाता है, इट गोज फास्टर नाउ, मतलब इसका करंट बढ़ जाएगा, मतलब इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। मतलब अब क्या होगा, अब न्यू केस में ऐसा होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और पहले का कम है, मतलब टोटल कैंसलेशन नहीं है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब नेट डायपोल मोमेंट नाउ इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये नेट डायपोल मोमेंट जो है ये अल्टीमेटली तो मैग्नेटिक फील्ड देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस की वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट है, इसलिए सच मटेरियल्स विल बी वीकली रिपेल्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में जब आप रखोगे इसको, दे विल गो फ्रॉम stronger region of the external field to the weaker region of the external field, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा आइडिया है डायमैग्नेटिज्म का। डायमैग्नेटिज्म में होता ये है कि दे हैव
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर एक एटम की बात करोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं वहां पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं मान लेता हूँ एक ऑर्बिट में एक शेल में है तो कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। बट जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन मतलब करंट लेस मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेस। दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाज अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, इट स्पीड्स अप मतलब करंट इज मोर, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मोर। मतलब अभी रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब इस एटम ने खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना लिया जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज वीकली रिपेल्ड। और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स, क्योंकि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ऐसा केस है ये, राइट? सो आई विल स्टॉप हियर विद दिस इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट सेशन वापस डायमैग्नेटिज्म देख लेंगे, उसके प्रॉपर्टीज देख लेंगे, एंड कल के सेशन नेक्स्ट सेशन में पैरामैग्नेटिज्म भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। सो फेरोमैग्नेटिज्म विल गो इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास।